So what we understand is problems बहुत सारे हैं, neuromuscular health issues. Yes or no? कुछ pains and aches, mobility issues, और आज तो ऐसा हालत है कि even youngsters are suffering from these kind of pains and aches, which used to be the disease of the retired or the 60 plus people. Yes or no? Do you agree with me? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि आज के तारीख में जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो आगे 60 के अबव लोगों को होता था. सो व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है कि आज हमारे फ्यूचर जनरेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है? एनीबडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? Why are we seeing this stark change in spite of good quality food, in spite of all the technology facilities? फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है. लाइफस्टाइल, वीक हेल्थ सिस्टम, स्ट्रेस. ओके, तो आप लोगों ने बता दिया कि ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंडीशन है, द ग्रेट क्लाइमेट चेंज, पेड़ काट रहे हैं, सब कुछ प्रॉब्लम में आ रहा है, पोल्यूशन लेवल इज हाई. सो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वी आर गेटिंग इनटू प्रॉब्लम. अब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा. यस और नो? मेडिसिन खा खा के तो हम साइड इफेक्ट पालेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी कि मेडिसिन खा के कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स बढ़ रही? And of course, we do not enjoy having pills early in the morning. कितने लोगों को पिल्स खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा. तो अभी आपको अगर अपना करंट कंडीशन चेंज करना है तो आपको आपकी दिशा बदलनी पड़ेगी, यानी कि यू हैव टू चेंज योर पाथ. जो भी आपको मालूमात है उससे थोड़ा आपको अलग हटना पड़ेगा, अलग सोच रखनी पड़ेगी. एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी टू कम आउट ऑफ योर करंट प्रॉब्लम्स. तो कितने लोग यहाँ तैयार हैं अपने आप के ऊपर काम करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स? कितने लोग तैयार हैं? ओके, तो I will be furthering the webinar and let you know more about Ashtaang Chikitsa. If I have your permission, I would like to share the screen. आप इत्मीनान से बैठ जाएं in your virtual seats so that nobody disturbs you, no pets, no children. और आप अपने ह्यूमन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत मालूम करें. उसके बाद आप स्वामी जी के वीडियो से और भी गहरी जानकारी पाएंगे कि कैसे हमारा ह्यूमन सिस्टम काम करता है एंड हाउ वी कैन कम आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम. So if I have your permission, I would like to share the screen. Thank you so much. Now I would share the screen. Just give me 2 minutes. So Ashtaang Chikitsa, the online therapy for just a sec. Neuro Musculoskeletal Problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Botra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtaang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhuji, a rare Kumbhakyo. Swami Rajvibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine.
He's taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing Neuro Musculoskeletal Problems with Ashtaang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will be talking about the अष्ट शरीर. शायद आपके लिए ये शब्द भी नए होंगे कि हमारे बॉडी में 8 सॉफ्टवेयर्स हैं. सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, prakriti sharir, and the vikriti sharir. So when we talk about the neuromuscular health issues, the last two sharir is the most important, which is the prakriti and the vikriti sharir, yani ki the regenerative factor and the degenerative factor of the body. तो होता क्या है, जब आप प्रॉब्लम में आते हैं तो imbalances होता है and your degeneration is at a faster pace than the regeneration. So Ashtaang Chikitsa can also heal some of the most commonest problems that we see among participants: knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. Ashtaang Chikitsa can also heal some very, very chronic diseases like muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. Let's hear from Swami Raj Vibhu ji. उन्हें हमें क्या बताना है अष्टांग चिकित्सा और कैसे हमारा ह्यूमन बॉडी फंक्शन करता है और किस तरह से आप अपने शरीर के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं. So let's pay attention to what he has to say about the human body and the diseases, because you will not find this any information in anywhere else, whether it's YouTube or Google. Nowhere will you find this information. Through his knowledge, thousands of people suffering from chronic ailments have transformed their lives completely. It can change yours also. तो देर ना करें, लिख डालें आपके problems along with your name and number. So as I put in my last slide, please pay attention to all the details that Swamiji is mentioning in his video. उससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि कैसे बॉडी फंक्शन करता है और जो आपको एक्सटर्नली दिखता है, चाहे वो लालीपना है, चाहे वो सूजन है, that can actually be redirected to some organ malfunction. So without delay, we will be hearing Swami Raj Vibhu ji's video. So सब लोग अपना virtual seats ले लें without any disturbance for 1 hour minimum. So I'll just tell you how we proceed in the webinar. After this, you will be listening to the program details. Then we will be having somebody live who's been a participant of Ashtaang Chikitsa to share his or her journey. So over to Anilji to share program with you. Thank you so much. Namaste. So let's start.
न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, दे एक्चुअली क्रिएट एवरी मूवमेंट इन योर बॉडी। आपके शरीर में वही मूवमेंट क्रिएट करना है। सो आई विल टेक वन एग्जांपल एंड लेट्स गो अहेड अंडरस्टैंडिंग व्हाई प्रॉब्लम हैपेंस एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे। So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक knee injury किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो, people are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग। दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes, what does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है। Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है। Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of
breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility.
क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो। योर बॉडी डजंट वांट टू। अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है, यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर। इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन। This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे। हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया। डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So, is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So, आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति, अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, एंड देयर इज अ मेथड टू डू इट। इसका एक तरीका है करने का। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, व्हाट डू यू डू? समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मार रहा है, यू फील डैमेज ना, यू थिंक देयर विल बी अ डैमेज। व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? यस और नो? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। व्हाट एवर आई एम सेइंग, यू नो इट ऑलरेडी। तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना। अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देयर आर सर्टेन सीन्स दैट यू डोंट वांट टू वॉच, देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे। एक बच्चे को देखो, सी अ किड, द किड विल क्लोज द आईज, सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस, यू होल्ड योर ब्रेथ। If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको, you hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम। So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand.
isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal Problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go.
Let's go to the third part, pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, तो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ.
You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना?
क्या हुआ? गैसेस रिलीज हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा. ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देर इज अ पंपिंग ऑर्गन. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीज टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देर इज अ कॉन्स्टेंट रिजुवनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यासा एंड मर्म विन्यासा, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वाता? मूवमेंट. वाता ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, Vata dosh से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata, Pitta, Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem.
Now, something called as drop foot, न्यूरोपैथी, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics.
because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें stress होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक force के बारे में बात किया. The upward force is called udana. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it udana. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects.
ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है। 3 चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अंग न्यास, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हठ विन्यास, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज कुंभक थेरेपी. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, not never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now, I would like to request Anilji to please share the program details. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. Let me share my screen. रचना जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ. रचना जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं. Okay. So let us know about the Ashtaang Chikitsa online program details now very quickly. A lot of people are already waiting for it. जल्दी से जान लेते हैं अष्टांग चिकित्सा प्रोग्राम के डिटेल्स क्या है, कैसे कैसे क्लासेस रहेंगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, ये सारी बातें अभी जानते हैं. First of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो ट्रेंड कुंभक मेंटर्स होते हैं, स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं, वो ये क्लासेस आपकी कंडक्ट करते हैं. इनकी गाइडेंस में ये प्रोग्राम चलता है. जस्ट लाइक यू आर अटेंडिंग द वेबिनार ऑन द जूम ऐप, इन द सेम वे योर क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन द जूम ऐप. ये हुई पहली बात. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Then, as Swamiji told in the video also, there are 3 modules in the program: Vata, Pitta, and Kapha, or module 1, 2, and 3. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. हर मॉड्यूल की जो अवधि है वो 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते. So 3 weeks into 3 modules make it a 9-week program. 9 हफ्ते का टोटल प्रोग्राम बनता है, या फिर 63 दिन का. 63 days is the overall engagement with us. But if you see here, it's written 9 plus 1 week. So why 1 week extra? We'll get to understand shortly.
एक एक्स्ट्रा इसमें हफ्ता क्यों जुड़ गया है वो थोड़ी देर में आप जान पाएंगे. There'll be two live classes every week, out of which one is called the learning or the main class, and the other one is called the mentoring or the practice class. हर हफ्ते दो लाइव क्लास रहेंगी. एक मेन क्लास कहलाती है और दूसरी प्रैक्टिस क्लास कहलाती है. इस तरीके से 9 हफ्ते आपकी क्लासेस रहेंगी. सो 9 इन 2 वीक्स मेक्स इट 18 वीक 18 क्लास प्रोग्राम. 18 क्लास टोटल रहेंगी. What are the next steps? आगे आप क्या कर सकते हैं? You pay the program fee and there is a special group fee because this fee we offer in the webinar only because we get people in a group, so we can lower the prices, normal pricing, so that many people can take advantage. After that, you fill the participant onboarding form. उसके बाद आप एक पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरेंगे. इसमें आपके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए जाएंगे कोर्स एक्सेस के लिए. What is this course access? That also we'll talk about. ये course access क्या है इसकी भी हम बात करेंगे अभी. And then you start your classes starting with module 1. Module 1 क्या है? वाथ मॉड्यूल. उसके बाद अ, आप मॉड्यूल 2 में जाएंगे या कह सकते हैं फिफ्थ मॉड्यूल में जाएंगे और लास्ट में टफ मॉड्यूल. Many people ask us which module they have to choose. काफी लोग पूछते हैं कि हम कौन सा मॉड्यूल हमने चूज करना है. कोई चॉइस नहीं है. यू हैव टू कंप्लीट ऑल. आपने सभी मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, एक के बाद एक. पहले वाथ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल एंड देन टफ मॉड्यूल. टोटल क्लासेस मॉड्यूल 1 में होंगी 6 क्लासेस. मॉड्यूल 2 में भी सेम 6 क्लासेस. मॉड्यूल 3 में भी 6 क्लासेस. सो 6 क्लासेस इंटू 3 मॉड्यूल्स मेक्स इट 18 लर्निंग क्लास. But if you see in white, it's written one customization class apart from the 18 learning classes. आप इसमें देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन क्लास भी लिखी है. What is this customization? ये customization क्या है इसकी भी हम बात करेंगे. So total engagement will become 10 weeks instead of the 9 weeks. So total जो आप हमारे साथ रहेंगे वो 10 हफ्ते रहेंगे ना कि 9 हफ्ते. Batch 178 is starting on 11th March, which is a Monday at 7 p.m. हमारा 178वां बैच शुरू होगा 11 मार्च को सोमवार के दिन शाम 7 बजे. एक वीकेंड कम मॉर्निंग बैच होता है. एक वीकेंड और जो सैटरडे संडे को होता है वो मॉर्निंग का है और वीकेंड भी है. 2 in 1 प्रोग्राम है. सो ये 6 अप्रैल को है सैटरडे एट 7 a.m. इसकी क्लासेस सैटरडे संडे ही होती हैं फॉर पीपल हु आर वर्किंग एंड दे डोंट एंड दे can't attend the evening session. So this is a special program for them, a special batch for them. 7 बजे का सुबह. Then what is the class experience like? क्लास में कैसा अनुभव रहता है? These are live sessions as you must have understood by now. अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये लाइव सेशंस रहेंगे Zoom ऐप के ऊपर. Just like you are attending the webinar or the Zoom, in the same way the classes will be conducted. Mentors watch all the participants in the class. हमारे जो mentors हैं वो सभी पार्टिसिपेंट्स को कैमरा पर देखते हैं. एंड दिस इज द रीजन यू टू कीप योर कैमरा स्विच्ड ऑन इन द क्लासेस. इसी वजह से आपको अपना कैमरा क्लास में ऑन रखना कंपलसरी होगा क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है. जब तक हमारे मेंटर्स आपको देखेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं. हाउ विल द मेंटर्स नो if they don't watch you on your camera that if you are doing the kriyas correctly or not. So that is a very important part. Then there will be written instruction in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी रहेंगे. Then session recordings will be there. What are these session recordings? These are class recordings. All the classes will be recorded, and after the classes finished, all the recordings will be uploaded to your course dashboard. ये सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग की जाती है और क्लास खत्म होने के बाद आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती है. Then there'll be a lot of extra things during the course of your program. काफी चीजें इसमें एक्स्ट्रा रहेंगी like mental practices, unique diet perspective will be given. Mind you, this is not a diet plan. इसमें कोई परहेज नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं डाइट के ऊपर. आपके किस तरीके का खाना खाना है. आपको एक वीडियो मिलता है स्वामी जी का जिसमें वो बताते हैं किस तरीके से अपने खाने को इस्तेमाल करना है ताकि वो आपको नुकसान ना करे. राइट. So you'll get a video from Swamiji. So he'll be talking about the basics of food. We know, we used to know, but we have forgotten. Our ancestors used to know all the basics of the food and how it has to be used, but we have forgotten. So एक अलग video मिलेगा. There are no diet plans in this. There are no dietary restrictions.
इसमें कुछ परहेज नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल होता है. Then there'll be simple detox processes. And during the course of your program, a lot of knowledge will be shared with all the participants. And before I share further details, it's very important to know who this program is not for. ये भी जानना जरूरी है ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये एक्चुअली किन लोगों के लिए है. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. See, when you are into problem and a chronic problem and you have been suffering for a lot of years, somehow this thing creeps into the mind that if there could be a magic pill, अगर कोई एक जादू की दवाई मिल जाती, तो ऐसा कुछ नहीं है. स्वामी जी वीडियो में भी बोलते हैं और वो बहुत बार बोलते हैं कि ये मेंटेलिटी हो जाती है, काश कुछ ऐसी दवाई मिल जाए. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. And if you just want results tomorrow only, then also it's not possible. Because see, you have to understand that the problem that you're into did not come overnight. So it will not go overnight. ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो आपको प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो हेल्थ इश्यू है, वो रातों रात नहीं आई है. वो प्रॉब्लम तो रातों रात जाएगी भी नहीं. ये हमने समझ रखनी है. Then this is not for those who are not ready to work on their body. ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने को तैयार ही नहीं है. जैसे मेरी काफी लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि इतना तो हम इसमें टाइम नहीं दे पाएंगे, कुछ दवाई हो तो आप बता दीजिए. दवाई तो कुछ बन नहीं सकती. ठीक है, दवाई ऑलरेडी इतनी सारी है, बट प्रॉब्लम तो दूर नहीं हो रही है. तो जब तक अपने शरीर पर काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम से बाहर आना मुश्किल है. वो मैनेज ही करते रहेंगे दवाइयों से, बट नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 80 to 90 मिनट्स एवरी डे ऑन देमसेल्व्स. अगर आप 80 से 90 मिनट शुरुआत में 80 से 90 मिनट लगेंगे, बाद में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये क्रियाएं आपको याद होती जाएंगी, तब थोड़ा समय कम लगेगा. तो अगर इस तरीके का टाइम आपके पास नहीं है, समय नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अ टाइम, then also this program is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when you are in pain, some chronic ailment, the patience goes down. But still, from our side, we have to say that you'll have to be patient, because, like I said before, also there's no magic pill, so it will take some time. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. This is a very, very important point. ये बहुत जरूरी point है, because most of you must have seen an ad on Facebook or Instagram where we advertise that there's a free introductory webinar about Ashtaang Chikitsa. Now, when we announce the fee, people find it very strange. They say that you advertise that it's free. The webinar that you are attending right now is free. The treatment of 9 weeks plus 1 week, 10 weeks, that is to be done under supervision and under expert guidance. So that cannot be free. काफी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये प्रोग्राम ही फ्री है. वेबिनार फ्री है बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन है अष्टांग चिकित्सा के बारे में, आपको बताया जा रहा है. स्वामी जी ने जो बताई हैं अभी बातें, वो बताई जा रही हैं, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन वो और कहीं अवेलेबल होती नहीं है. तो उसकी कोई फीस नहीं है, और वही चीज हम एडवर्टाइज करते हैं. प्रोग्राम ऑफ 9 वीक्स, इट्स अ पेड प्रोग्राम. सो ये तो हुई पहली बात. एंड if you're somebody who's joined just to pick up some tips, see, there are no tips given. स्वामी जी ने भी कोई टिप्स नहीं दिए हैं, हम भी कोई टिप्स नहीं देने वाले, बिकॉज टिप्स के बेसिस पर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता. अगर ऐसा होना होता तो हजारों लाखों वीडियोस है ना यूट्यूब पर, हजारों एक्सपर्ट्स भी हैं, कोई ना कोई टिप दे ही रहे हैं, बट फिर भी लोग ठीक तो नहीं हो रहे हैं ना. तो एक परमानेंट या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं. और इसमें अभी जो मैं बात करूंगा एक डायग्नोसिस की, जिससे जड़ पता कर पाते हैं स्वामी जी बीमारी की, वो इसका जादू है. ओके, सो इट्स नाइदर अ फ्री ट्रीटमेंट एंड नॉट नॉर दिस इज फॉर सम टिप्स. नाउ व्हाट ऑल यू गेट इन द प्रोग्राम, लेट्स टॉक अबाउट इट. ये बहुत जरूरी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई कैन से. नाउ, प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. What is this? This is to find, like I just mentioned a while back only, this diagnosis is done first of all online
and secondly, it's a non-medical diagnosis. Now, both the things may sound very strange to you because you may be wondering how is a diagnosis done online and how can a non-medical diagnosis address medical problems. ये बड़ी अजीब सी बात शायद लगेगी आपको कि कैसे ये ऑनलाइन में होता है और नॉन मेडिकल टेस्ट क्या होता है, नॉन मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है. लेट मी एक्सप्लेन. दिस इज अ यूनिक diagnosis and one of its kind. Uh, how this is done? Let me explain to you. You will get a link to a form. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड यूल बी आस्क्ड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर ब्रेथ एंड इमोशन. और आपको अपनी सांस के ऊपर और इमोशंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा जाएगा एंड देन यू हैव टू नोट दोस डाउन इन द फॉर्म. फिर आपको वो लिखना होगा जो आपने एक्सपेरिमेंट किया और क्या रिजल्ट निकला वो आपको लिखना होगा फॉर्म में. सेकेंडली, यू विल बी राइटिंग अबाउट ऑल योर हेल्थ इश्यूज इन दिस फॉर्म. उसके बाद दूसरी चीज जो आपको बोल पूछी जाएगी, जितने भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की कि जितनी भी है इस फॉर्म के अंदर लिखनी होगी. एंड थर्ड थिंग दैट यूल बी रिक्वायर्ड टू डू इज you'll be required to upload a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible, but no specs on the eyes. And in case of ladies, no makeup also. तीसरी जो चीज आपको बताई टिप होगी, एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी जिसमें आपका चेहरा बहुत ही साफ दिखाई देता हो लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो. When these three things reach Swamiji, he is able to determine which forces out of the 84 forces has become weak. If you paid attention to what Swamiji was telling in the video, he mentions about 84 forces. अगर आपने ध्यान दिया हो वीडियो में और याद हो आपको, स्वामी जी 84 शक्तियों की बात करते हैं. हमारा शरीर जो है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अंग जो हैं, वो 84 शक्तियों के अगेंस्ट काम करते हैं या उनके थ्रू काम करते हैं. इस डायग्नोसिस से स्वामी जी पता कर पाते हैं इन 84 शक्तियों में से कौन सी वो शक्ति कमजोर हो गई है जिसकी वजह से आप अभी जो मौजूद हालात में हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, जो हेल्थ इश्यूज में हैं, उस वो चीज स्वामी जी इससे पता कर पाते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादातर डायग्नोसिस होते नहीं है. कोई भी ट्रीटमेंट आप कराते हैं, नॉट मेनी पीपल ट्राई टू डायग्नोज द एक्चुअल प्रॉब्लम. वो ऑब्जर्वेशंस होती है जो एलोपैथी में जो एमआरआई स्कैन्स व्हाट नॉट जो कोई भी टेस्ट वगैरह करते हैं, दोज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस. राइट, वो ऑब्जर्वेशन की हमें ये दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट ऑल द रिपोर्ट्स आर अबाउट, बट वो ऐसा क्यों हुआ वो नहीं बता पाते हैं. तो इसलिए ये बहुत यूनिक है और कंप्लीटली इस थेरेपी का ये जादू है. इट्स द मैजिक ऑफ दिस थेरेपी. नाउ second point is about weekly one main class of 60 to 90 minutes. There'll be a weekly main class of 60 to 90. Why 60 to 90? 60 is the actual duration. Then the mentors will take questions and they'll answer all the questions in the after the class. So another 30 minutes. So that's why we say 60 to 90. Then weekly one practice class of 60 to 90 minutes. That will be there. Access to recordings of the live classes for 3 months. All the, like I already said, that all the classes are recorded and they'll be uploaded to your course dashboard. And this access will remain with you for 3 months. After the 10 weeks are over, after the 10 weeks of the program are over, after that, 3 months till 3 months, the access will be there. जैसा कि मैंने बताया कि सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग की जाती है और अपलोड कर दी जाती है आपके कोर्स डैशबोर्ड में. और ये आपको इसकी अब एक्सेस रहेगा 3 महीने तक. 10 हफ्ते तक आपका प्रोग्राम चलेगा, उसके 3 महीने तक आपके पास पूरा एक्सेस रहता है. आप दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, इसलिए ये एक्सेस दिया जाता है. देन वीडियोज ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास. लास्ट पॉइंट था क्लास रिकॉर्डिंग के बारे में. द लास्ट पॉइंट वाज अबाउट द क्लास रिकॉर्डिंग, बट दिस इज अबाउट videos of all kriyas separately. Like you don't have to watch the full 90 minutes of the class recording just to see how a particular kriya is done. आपको पूरे 90 मिनट की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई एक क्रिया कैसे की जाती है. ये छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे क्रियाओं के. तो जो भी आपने क्रिया का वीडियो प्ले करना है, हो सकता है उसको देखने में आपके 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, तो आपको टाइम इसमें काफी सेव होता है. So small videos of all kriyas will be given. Then written instructions in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश आपको मिलते हैं. These instructions can be downloaded and you can even print and refer to them while doing your daily kriyas. In जो लिखित निर्देश है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं और अपनी क्रियाओं करते वक्त
उनको उससे फॉलो कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. Then private WhatsApp group to ask your doubts and questions is, this is very very important, and this is a daily support group that you'll be added to as soon as you enroll. आपको डेली सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जैसे ही आप एनरोल करते हैं. Like 2 days of the week you'll be live with us, but the remaining days when you are practicing on your own, and if you have any doubt that time, so this is the place you'll be asking your doubts or questions in. Our mentors are added in these groups. They'll be answering all your questions, clarifying all your doubts, and guiding you step by step. जैसा कि मैंने बताया कि हफ्ते में 2 क्लास रहेंगी, तो क्लास के टाइम तो आपने पूछ लिया, बट मेन जो आपको डाउट्स आने शुरू होंगे वो तब होंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. 2 हफ्ते तो आप लाइव रहे, बाकी 5 दिन आप जब खुद प्रैक्टिस कर रहेंगे और उस समय कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, तो इस ग्रुप के अंदर आपको पूछना है. ये आपका क्लास व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहां पर डेली सपोर्ट आपको मिलता है. 6 days अ वीक, संडेज ऑफ होते हैं. तो ये डाउट्स क्लियर करते आप अगर आप रहेंगे और नेक्स्ट डे पर डाउट्स आप नहीं लेकर जाएंगे, तो कोई भी चीज, कोई भी क्रिया आपको बचेगी नहीं आपके, क्योंकि डेली डाउट्स क्लियरिंग, डेली प्रैक्टिस, नेक्स्ट द सेम डे और क्लैरिफाइंग डाउट्स. तो इस तरीके से ये सपोर्ट सिस्टम हमारा चलेगा. Then individual participant and progress tracking and feedback. This is a very important part of our program, because unless we track that if you're making progress or not, so how will things make any sense to you? अगर हम ट्रैक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है. तो हर हफ्ते आपको एक फॉर्म भरना होगा, छोटा सा फॉर्म होगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है. एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत जरूरी एक पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लिंक्ड है फर्स्ट पॉइंट से. द फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट प्राण शक्ति डायग्नोसिस. नाउ, based on your Pran Shakti diagnosis, every participant's kriyas will be fine-tuned and customized in the 10th week. प्राण शक्ति डायग्नोसिस के आधार पर आपकी जो क्रियाएं होंगी, आपकी जो थेरेपी होगी, उसको कस्टमाइज किया जाएगा, फाइन ट्यून किया जाएगा. स्वामी जी फाइन ट्यून करेंगे, कस्टमाइज करेंगे 10वें हफ्ते में. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इफ द डायग्नोसिस इज डन इन द फर्स्ट वीक, व्हाई द कस्टमाइजेशन इज डन इन द 10th वीक? एक सवाल उठता है ना कि अगर डायग्नोसिस पहले हफ्ते में किया गया तो कस्टमाइजेशन 10th वीक में क्यों है, 10वें हफ्ते में क्यों है? राइट. एक रीजन है उसका. व्हेन when you are into some kind of a disease and disease at chronic disease at that, so lot of internal weakness is there. काफी कमजोरी, इंटरनल कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी होती है जब आपको कोई ऐसी क्रॉनिक एलिमेंट होती है, कोई बड़ी एक तरीके की बीमारी होती है जो सालों साल से. अगर कस्टमाइजेशन पहले ही हफ्ते में दे दिया जाएगा, शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा. द बॉडी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इफ द कस्टमाइज्ड प्रैक्टिसेस आर गिवन इन द फर्स्ट वीक ओनली. तो इन 9 हफ्ते में अंदरूनी ताकत को बढ़ाया जाता है ताकि जब ये आपको कस्टमाइजेशन मिले तो वो शरीर झेल पाए चीज, उन क्रियाओं. सो दिस इज द रीजन दैट द कस्टमाइजेशन इज डन इन द 10th वीक. और इन 9 हफ्ते में 3 मेन चीज होती हैं. देर आर 3 primary things that happen in these 9 weeks through which your internal strength is developed. First, the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced through Kumbhak. Second, you will be taught controlled exhalation. आपको controlled exhalation सिखाया जाएगा. And this is the reason, if you are doing any kriya that involves forced exhalation, you will be advised to stop it for another 5 to 6 months. 5 से 6 महीने के लिए आपको मना किया जाएगा अगर आप कोई ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिसमें बहुत जोर से सांस छोड़नी पड़ती है. जैसे कपालभाति एक क्रिया है. कपालभाति इज वन क्रिया इन विच यू हैव टू एक्सेल forcefully. So you'll be advised not to do it for 5 to 6 months, because here we are teaching you controlled exhalation. यहाँ पर आपको controlled exhalation सिखाया जा रहा है. तो कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें जोर से सांस छोड़नी पड़ती है वो नहीं करनी. And third thing that happens in these 9 weeks is the 3 basic alignments of the body. Like Swami ji talked in the video also. Swami ji ने वीडियो में ही बात की है कि 3 बेसिक अलाइनमेंट होती है शरीर की. इधर थाइस, नेवल और चेस्ट, इनका स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट होता है.
काफी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं, स्पेशली इन द न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल कैटेगरी, जो एक मिस अलाइंड स्ट्रक्चर की वजह से होती है। तो ये तीन चीजें होती है, 9 हफ्ते में की जाती है, शरीर में इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड की जाती है, और फिर 10वें हफ्ते में आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस मिलेंगी, वो सबके लिए अलग अलग। द कस्टमाइज प्रैक्टिसेस विल बी डिफरेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। नाउ 10th point is about extra free support for 7 days after the program is over. 10 weeks the program will get over, but you still get 7 days in case you have any doubts or if you want to ask something. Okay. But if you're practicing daily and clarifying your doubts in the WhatsApp group, in your class group, then hardly there are any doubts left after the program. But still, if there are any doubts, you still get 7 days more. Then specially recorded audio instructions are given, which you can just listen and do your practices. स्पेशली रिकॉर्डेड ऑडियो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, ताकि आप उसको सुनते रहें और साथ साथ करते रहें। ये इसमें फर्क क्या है ऑडियो और वीडियो में? वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, बट ऑडियो में सिर्फ सुनना है आपने, और इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मिलती जाती हैं वैसे वैसे आपने करना। तो ये टाइम सेविंग बहुत होती है इसमें। ऑल दिस पॉइंट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। सो व्हाट्स द कोर्स फी? काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्स फी क्या है, देखते हैं कितना है, कम है, ज्यादा है। But first look at how much you may already be spending to manage your disease with allopathy and physiotherapy. एक बार एक नजर डाल लेते हैं कि शायद कुछ खर्चा इतना हो रहा होगा एलोपैथी अगर फिजियोथेरेपी से आप अपना को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो। Yearly expenses हैं, these are yearly expenses, and if you see doctor fee you may be paying 6,000 to 12,000 every year. हर साल शायद इतना कुछ डॉक्टर की फीस के रूप में जा रहा होगा। Physiotherapy, if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 every year, depending on the kind of physiotherapist you have. And then medicine may be costing another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year may be going towards just managing the problems that you are into. मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, बट हम जो कुंभक के थ्रू बात कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की है, परमानेंट सोल्यूशन की है। एंड वी नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट हियर सो मच। ये मैंने क्यों शेयर किया नंबर्स? व्हाई डिड आई शेयर दिस? सो दैट व्हेन आई अनाउंस द फी, बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी लाइक टू कंपेयर थिंग्स कि देखिए कितना महंगा है, कितना सस्ता है। But like there's nothing like Kumbhak, that is one, because nothing from outside is put into the body. Body's own strength creating mechanism, which is Kumbhak, is used to strengthen the internal organs. So it's completely natural, completely safe. Uh, Now, program fee क्या है? 30,000 is for one-on-one classes. If you take one-on-one classes, this is the fee that you pay. But like I said, there's a group pricing. When we get people in a group, we can lower the prices to a great extent. And what is that special group pricing? Just 7,500. But because we have limited number of seats, so this fees is available till 9th March only, Saturday 12:30 p.m. So if you understood, if you feel this is something that you like to go with, you can enroll. And if not, then you may ask questions maybe tomorrow or day after. So to clarify any further doubts that you may already be having. And then how to enroll? There's a 5-step process. Pay the program fee. पहला कदम है पे, अपने जो प्रोग्राम फी है वो पे करनी है। देन पोस्ट द पेमेंट रिसिप्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, वेबिनार ग्रुप में है, उसमें आप अपनी रिसिप्ट पोस्ट कर दीजिए। नेहा हमारी टीम से आपकी रिसिप्ट को देखकर वो आपकी पेमेंट को कंफर्म करेंगी और फिर आपको पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भेजेंगी आपके पर्सनल चैट पर। आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, Neha from our team, she'll confirm the payment and send you participant onboarding form, which you'll be filling up. And then you'll be joining the class WhatsApp group where you get daily support. She'll send the link for this also. And then step 5 is to start attending classes to learn Ashtaang Chikitsa. Simple 5-step process है। Payment methods क्या क्या है? Debit card, credit card, net banking, GPay, Paytm, cash deposit in the bank. You can do bank transfer. International payments के लिए credit card और PayPal है। Whichever is convenient to you, you can pay by that method. Now, this is the last slide of my presentation. I'd like to talk about the super team at your service, our super team. And this title of super team has been given to us by our participants. ये हमने अपने आप को नहीं दिया है,
ये टाइटल दिया है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स ने, बिकॉज द काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग दैट इज डन, जिस तरीके का सपोर्ट उनको मिलता है, तो उन्होंने हमें एक सुपर टीम का टाइटल दिया है, बिकॉज ऐसा सपोर्ट कहीं और अवेलेबल नहीं हो शायद। अभी मैं थोड़ी बात करूंगा उसकी। नाउ we have Rashna Shrimal Bothra. She is the program director and she is the host of this webinar also. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of the batches, the who, which mentor to assign to which batch. Ashwini Kumar is the IT manager. Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge. She is the person you will be talking to the most before you start your classes. She'll be the one who will be confirming your payment, sending you links, and help you enroll and get inside that class WhatsApp group. Okay. Then there's a full team of mentors: Ranjana, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi, Vibha. Why we need so many mentors? Because it's an online program. And in the online program, things are a bit different from physical programs. जो आप ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं तो चीजें उसमें अलग तरीके से करवाई जाती हैं, but you need not worry about it. Many people ask us that if it is at all possible to do these kriyas online, क्या ये वाकई में ऑनलाइन में पॉसिबल है करवाना? मैं थोड़े नंबर्स शेयर करता हूं, उससे शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। इन द लास्ट 30 months वी हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड मोर देन 5,500 पीपल इन लास्ट 30 months alone. एंड एज ग्रुप क्या था उनका? 18 years till 94 years. The highest age that we got a participant was of 94 years. So don't worry at all whether this will work online or not. This works beautifully well because we are experts at online therapy. We know what we are doing and we are not doing it for the first time. हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, 177 बार ये कर चुके हैं हम पिछले 30 महीने में, और 5,500 से ज्यादा लोग ये प्रोग्राम कर चुके हैं, सभी एज ग्रुप्स के। We are experts at this. We know what we are doing. So just be assured from that point. Then WhatsApp admin, Anil John, that's me. I'll be answering all your questions in the WhatsApp group, because here we'll take up a few questions, but due to shortage of time, we may not be able to take up all the questions. So please post your question in the WhatsApp group. We'll answer each and every question. No question will be left answered. हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा जो आप ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम सभी सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय की कमी की वजह से, बट व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिए उसके बाद अगर आपका सवाल नहीं लिया जाता है। देन टेक्निकल में हिमांशु रेड्डी है। हिमांशु is the person who's responsible to upload all the videos to your course dashboard, upload all the instructions. Anything technical problem if you face, Himanshu is the person who will be helping you. Then there are four member team for the personal support. What is this personal support? These are people, Anita, Ankana, Kavita, and Usha, who will be calling each and every participant on the phone. अनीता, अंकना, कविता, उषा जी, ये आप सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉल करती हैं फोन के ऊपर। वो क्यों कॉल करते हैं? ये जानने के लिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपको सभी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कोई आपके वीडियोस प्ले हो रहे हैं क्या, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड किए जाते हैं, आप वो उसको ठीक से एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो पढ़ पा रहे हैं, वो डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। There's a proper team in place, and the kind of handholding, the support that you'll get is uh, like no other support that you may have experienced elsewhere. That's why हमारे जो participants ने हमें super team का title दिया है. And with this, I come to the end of my part of the presentation. Thank you and namaskar. I hand over the webinar back to Rashna. Thank you so much, Anil ji, for sharing the program details with our participants. Now, I would like to invite Shashi Thonape sir to please share his journey of Ashtaang Chikitsa. So, over to Shashi Thonape sir. Hello, good evening, everyone. So, my name is Shashidhar. Okay, I stay in Bangalore, and being an IT professional since 20 years. Okay, I saw an ad from Facebook on Umbak. Okay, initially I did not enroll, but after some time, it was pulling me to get enrolled. So when I enrolled, I was in a doubt. Okay, is this the same kind of a program like other pranic healing and all those things, which I have already done? Okay, but I took the decision and I joined this course. And three things I learned in this course. One is how to breathe, how much to breathe, and how to breathe. Okay.
And the Kumbhak I felt very, very powerful. Okay, currently I am in 171 batch. Okay, and currently the Vata and the Pitta model is completed. Okay, now only the Kapha model is still pending. Okay, and I get a very tremendous amount of confidence in me. Okay, in whatever activities I'm doing currently daily. Okay, and main thing is I have become very cool. Okay, whatever happens, I know how to come back to the normalcy. Okay, and this has helped me in sleeping very nicely, and also I do a regular meditation and all. Okay, and I found that when I do a meditation, my meditation level is going very deeper after practicing Kumar. And I thank very much to Guruji and all the team, okay, who made this possible. And really, it is a fantastic program. Okay, I encourage everyone to join this. This is my short. Thank you so much, Shashidhar sir, for joining us. Now, I would like to invite Ganesh Yavalkar sir to please share his journey of Ashtaang Chikitsa. Ganesh sir. Ganesh Yavalkar sir. Oh, so sorry, ma'am. Kunda. Actually, Ganesh is a common name, so it's my mistake. Apologies for that. Ma'am, you can unmute, please. मैम अभी भी नहीं हुआ कोई घर पे है तो दे कैन अनम्यूट फॉर यू मे बी at the left hand corner there is a button mute unmute. Good evening, everybody. I am Kunda Yavalkar, a retired teacher. I have been suffering from knee pain from last 10 years. My left knee was always paining and I was not able to make it straight. So I joined this Kumbhak therapy class from last 6 weeks and I am practicing all the kriyas what Swamiji has taught us. I found tremendous improvement in my knee pain. My left leg was not remaining straight. I was not able to make it straight. It used to be bent at the knee. After practicing all these kriyas for last 6 weeks, I started feeling the difference. Now when I sit on the floor with my both the legs stretched, my left leg is no longer bent. It is straight and similar as my right leg. Also, the intensity of pain in the knee is reduced. I have found remarkable improvement in my walking. And my pain in the left shoulder and left thumb is also reduced. I am enjoying all these kriyas and I am feeling happy in sharing my experience with Avisa. All this has happened with Swamiji's grace and blessings. Also, my experience with Avisa team is very good. Meera ma'am, she explains each and every step in all the kriyas very clearly. She explains in Hindi as well as in English. She demonstrates all the kriyas nicely. Patiently, she listens to each and every question of the participant and answers them till the participants are satisfied. Whatever the audio clips which we are getting are very useful while doing the kriyas. I do all the kriyas without missing any step by following those audio clips. The videos which we are getting are also very useful. And I am confident by regular practice of all these kriyas for a few more months or a year, I will be benefited 100%. My sincere thanks to Swamiji and the Avisa team. Thank you very much. Thank you so much, Kunda Ganesh ma'am, for sharing your journey. Now I would just see for the questions that I can handle from my end. I will do so. And the rest of the questions we'll put in the webinar group so that Swamiji can answer it.
So let me see in the chat. Okay. Hussein Abbas sir talks about knee pain, severe one, and right foot pain from ankle to hip. So I think Hussein sir is not here. Yeah. Okay. So what I'll do is, Bharti Shivastav ma'am, I'll unmute you one by one and I'll take your questions up one by one. Okay. So Bharti ma'am, can you please ask your question? Please unmute and ask your question. कुलविंदर सिंह जी, फीस है 6,500 18 क्लासेस का, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने. सॉरी 7,500 and not 6,500. Whoever wants to ask the question, please raise your hands so that one by one I can take up your questions. Bharti ma'am, please ask your question. हेलो. Yes हेलो. ma'am. Yes ma'am, can you हाँ. switch on your camera please ma'am? नेहा कैमरा स्विच ऑन करने को बोल रहे हैं. नेहा जाने दो. हेलो. Yes ma'am, it's wonderful to यस see you. मैम. Yes, tell me ma'am. हाँ मैम, आई एम मिसेस भारती श्रीवास्तव ना. आई हैव Yes. मैं लगातार कैल्शियम एंड विटामिन डी ले रही हूँ. आफ्टर दैट मेरा ये लेवल बिलो डेफिशिएंसी ही है. मैं थायराइड पेशेंट भी थी प्रीवियसली, पर अभी तो कंट्रोल्ड है, पर फिर भी मैं 25 mg मेडिसिन ले रही हूँ. मुझे बॉडी में बहुत ज्यादा सनबर्न प्रॉब्लम भी है स्किन में. अच्छा. Okay. वेरी एक्यूट. मतलब हल्का Okay. सा भी रेज मेरे फेस पे आएगा तो मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. साथ ही Okay. मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है. अच्छा. ओके. तो या सबसे पहला चीज जो आपने बताया, मैं कैल्शियम और विटामिन डी ले रही हूँ, फिर भी मेरा लेवल्स बहुत डाउन कम है, है. कम हाँ, है. यस. तो डॉक्टर ने तो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया, बट उन्होंने एक चीज तो बताया ही नहीं. ये जो अब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में नहीं हो रहा है, वो चीज ये लोग कभी नहीं बताते. और आपको मैग्नीशियम भी लेना होता है कैल्शियम और विटामिन डी के साथ, फॉर द कैल्शियम टू गेट अब्सॉर्ब. नंबर 2. ओके. नंबर या 3, जब हम लोग कुंभक करते हैं तो अब्जॉर्प्शन फैक्टर हमारे बॉडी में बढ़ता है. जैसे जैसे हमारा एज होता है, अब्जॉर्प्शन बॉडी में घटती है. आप देखेंगे ओके. बहुत लोग जो बहुत वेट रहता है, वो जैसे एज होता है ना, धीरे धीरे घटने लगता है. क्यों? क्योंकि यस. आप जो खा रहे हैं ना, आपके बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है. तो या सिमिलरली कैल्शियम का आप टैबलेट खा लीजिए, आप डोजेज बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है. और ज्यादा कैल्शियम खाने से उल्टा आपको किडनी वगैरह का भी प्रॉब्लम शुरू होता है. हम आपको डराना ओके. नहीं चाहते हैं, बट जी. एक ही तरीका है. आप अगर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं बॉडी, कुंभक से कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है बॉडी. जी. और आपका जो डाइजेशन इश्यूज है, ब्लोटिंग है, सब कुछ हम लोग, ये तो है न्यूरोमस्कुलर हेल्थ के लिए, बट उसका हिडन बेनिफिट्स ये है कि बहुत कुछ ठीक हो जाता है जो शायद पार्टिसिपेंट मेंशन भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब कॉमन चीजें हैं, डाइजेशन इश्यूज वगैरह वगैरह. तो यस. ये एक प्रोग्राम से आपकी सारी चीजें ठीक होंगी. ओके. ओके. सो आई कैन जॉइन इट. Yes, you can join. श्योर. श्योर. Thank you so much, ma'am. iPhone Sansar Singh ji. iPhone Sansar Singh ji. आईफोन हेलो. हाँ बोलिए. हेलो हाँ जी, नमस्कार. नमस्कार. या मैम, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए. हाँ, मैंने अपना डिटेल दिया था, तो मैडम को बताया था मुझे कि मुझे हाथ और पैरों में जो ये सुनवापन आ रहा है,
और मेरी एज अच्छा, 65 है। सूनापन, नंबरनेस हो रहा है। नमीनस मेरे हैंड और लेग्स में है। हम्म। और मेरे ऑलरेडी पेसमेकर डाला हुआ है मैंने, एक अच्छा। स्टेन डाला था। और हम्म। मैं डायबिटिक से हूँ बहुत, 30 ईयर से, हम्म। सब बताया हुआ, मैंने हम्म। लिख के भेजा था। नाउ अच्छा। द प्रॉब्लम इज आई कैन ज्वाइन in April, because in March there are some functions in our family. So I could not join at March. I'll join in April. हम्म। Is there any group will start on April? Yes, there will be a group starting every Monday. We start a batch. बट Yeah. प्रॉब्लम ये है कि हम लिमिटेड लोगों को लेते हैं, तो हम हाँ. पार्टिसिपेंट्स को ऐसा सजेस्ट करते हैं, आप एक टोकन अमाउंट दे के आप अपना सीट बुक कर लीजिए जब भी आपको ज्वाइन करना है, और वो नेहा नोट कर लेगी, फिर वो जब आपको ज्वाइन करना है तो आप क्लास ग्रुप में एडेड हो जाओगे। अच्छा, उनको कुछ अमाउंट उनके उसमें अपना जीपे कर दूं मैं? हाँ हाँ, दो कितना करना हजार है? 3,000 जो भी ठीक, आपको समझ आए आप कर दो। ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद फिर, हाँ, पर वो दिन से काउंट नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो जब आपको हम्म, ज्वाइन करना है ना, नेहा उसका हाँ, तब नोट कर से। लेगी, फिर आपको मैसेज डाल देगी अच्छा कि आपका ये दिन से शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर जी। लीजिए, बाकी पैसे देके। ऐसे। अच्छा, वो जो अमाउंट दिया है उन्होंने 4999 समथिंग दी, 7999, सम 6500 7,000। नहीं, हम्म, 7,500 है ना। हाँ, 7500। हाँ, राइट। तो हाँ, आपको तो वो पूरा पे अमाउंट करना है। नहीं देना है, आपको एक टोकन 2-3 हजार जो भी आप देना चाहें वो दे दीजिए, हम्म। और जब आप ज्वाइन ठीक है। करेंगे तो वो जो बाकी बैलेंस है वो आप पे करके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका सीट मैम, बुक्ड हो जाएगा। मैं छोटा एक क्वेश्चन पूछना था। ये अभी मुझे हाँ। मेन, मैं एक्चुअली योगा भी करता हूँ, मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं वॉक भी हम्म। करता हूँ। हम्म। बट ये मुझे अभी कुछ टाइम से मुझे ये नवीनस आना शुरू हो गया है। हम्म। तो मैं आपका ये गूगल्स में, यूट्यूब्स में देखा था। हम्म। तो मैं वो आपकी एक्सरसाइज करता हूँ ऐसे सुबह, जो कुंभ है वो हम्म। करता हूँ, आपकी वीडियो देख देख के सर बोलते हैं और मैं करता हूँ। वो हम्म। 7 मैजिक है ना? हाँ 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 हाँ, वो मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं बढ़िया है। चाहता हूँ मैं, हाँ जी। हम्म। नहीं, वो तो बढ़िया है, आप करते हैं तो। जी। हाँ तो मैं चाहता हूँ मैं अप्रैल में, जब ये मार्च में सब फंक्शंस है, अप्रैल मिड में आके मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो तो तो जनरल मैं, है, ये पर्टिकुलरली हम लोग करवाते हैं इसके लिए, या जी क्या नाम उसका, जी ये न्यूरो मस्कुलर हेल्थ इश्यूज। जी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मार्च में, अगर मेरा जाना नहीं हुआ आउट मैरिज में आउट स्टेशन, फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। चलेगा चलेगा। हम्म, ठीक है। तो मैं आपका लिंक भेज देना मुझे। तो ठीक आपको है। एक नॉमिनल अमाउंट आप नेहा बता प्लीज देना। एक मैं, आप अपना नंबर नोट करवा दीजिए, चैट में लिख दीजिए। हाँ हाँ, मैं ऑलरेडी बात कर लिया है उनसे, मैडम कोई थी उनसे बात हुई है मेरी। कि मैं बोला था मार्च के एंड तक मैं ज्वाइन होऊंगा, अगर मैं नहीं गया किधर, फिर मैं अभी हाँ ज्वाइन हो जाऊंगा। ठीक है ना? पर इसमें आपको हाँ। क्या लग रहा है मुझे, मेन न्यूरो प्रॉब्लम कितने टाइम तक हो जाएगी मेरी? सर वैसे तो अभी देखिए, हम लोग सेंसिंग है, ऐसे कुछ अभी बोल प्रॉब्लम नहीं नहीं है। सकते, हर हाँ बॉडी जी। अलग होता है, और मोस्टली जी, देखा गया है ये 2 महीने के अंदर ही क्या, किसी किसी को तो एक हफ्ते में ही बहुत फर्क पड़ जाता है, तो ये नहीं, हम अभी लोग तो मुझे फर्क पड़ रहा नहीं। है, मैं ये जो आपका 7 मैजिक कर रहा हूँ ना, हाँ, तो आपके उससे पास थोड़ा आंसर अच्छा लग खुद ही रहा है। है ना। हाँ। हम्म। और बाकी नेहा क्या है, कैन यू मैं प्लीज, डाइट कर रहा हूँ। हाँ हम्म? 1 मिनट सर, नेहा वो जो चैट के क्वेश्चन है प्लीज आंसर करो। नेहा, यू देयर? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. हाँ, तो एक जन शेल प्रधान सर लिख रहे हैं, आई हैव नो बिग हेल्थ इश्यूज बट स्टिल वांट टू जॉइन, व्हाट डू यू सजेस्ट? तो जो क्वेश्चंस है प्लीज एक बार थोड़ा मेरे को हेल्प करो ना। तो शिल प्रधान सर, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर आई फिनिश विद सुरेश सर। यस, टेल मी। सॉरी, संसार सिंह सर। या मैडम, ओके, आप डिस्टर्ब होते होंगे तो ठीक है, मैं नहीं, हम डिस्टर्ब पेमेंट नहीं हो लिंक, रहे।
जी जो जी क्वेश्चंस है वो हम चाह रहे हैं कि सब लोगों का आंसर हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं आप नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपना तो मैं ठीक नंबर है। छोड़ दीजिए, तो नेहा हाँ मैं आपको नंबर पेमेंट लिंक अभी, भेज। हाँ मैं नंबर अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है, चलो। मैसेज में डाल देता हूँ। हम्म? हाँ, मैसेज में डाल दीजिए, नेहा नोट कर ली। ये क्रेडिट सुरेश क्रेडिट कुमार कार्ड भी शर्मा। आप लेते हो? हाँ, क्रेडिट कार्ड भी लेंगे ना। तो क्रेडिट कार्ड का लिंक भेज देना। तो मैं क्या सर आप करूँगा, हो सका तो हाँ पूरी पेमेंट कर देता हूँ मैं। 13-14 तारीख को मुझे पता लग जाएगा, 14th को। हम्म, तो 14 तारीख को ठीक है, मैं ठीक। पूरी पेमेंट ही कर दूंगा, 14 तारीख को। ठीक है, ठीक है, चले चले। क्योंकि मैं ओके। अभी डिस्कस करूंगा भाई लोगों से, फिर कैंसिल कर दूंगा। हाँ है नमस्ते ना? मैडम। ओके। नमस्ते। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। सुरेश हाँ जी। सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते मैडम, एक तो ये बात थी कि ज्वाइन करने के बाद ओके में मैडम। किसी कारण से मान लो। हाँ, हाँ, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। किसी कारण से आवाज सुनाई दे रही है मेरी ठीक तरह से? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा धीरे आ रहा है पर ठीक है। किसी कारण से अगर जैसे क्लास नहीं ज्वाइन कर सके, मान लो जैसे शाम का मैं अटेंड करना चाहता हूँ, तो वो हम्म मिस क्लास के बारे में क्या होगा? और कहीं मान लो चले गए, कहीं बाहर चले गए और कहीं नेट प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ और मान लो कि नहीं, तो वो मिसिंग जो क्लासेस हैं हाँ, उनका हम्म। उसमें कैसे एक मिनट, एक उसका होगा रियम्बर्समेंट या कैसे क्या होगा? तो इसके बारे में एक तो था। दूसरा, मल्टीपल जैसे मान लो आई एम 68 years oल्ड हम्म और मेरे मैं तो दोनों को प्रॉब्लम है, तो उसको तो शी कैन नॉट ज्वाइन अलोन, है ना? हम्म। तो इसमें कैसा करना होगा? तो बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ये करीब समझ लीजिए 21 डेज का मॉड्यूल होता है, तो 63 डेज, 2 महीना से भी ऊपर ही हो गया। तो मोस्टली पार्टिसिपेंट्स, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर क्लास आदमी अटेंड करेगा ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एंगेजमेंट्स होता ही है। तो आपके पास पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसमें आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में भी मेंटर्स आपको हेल्प कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो नहीं कर सकता है, उस आपकी वाइफ नहीं कर सकती है ना, बोला आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपकी वाइफ अगर नहीं कर सकती है, तो आप उनके साथ बैठ सकते हो, तो आप हेल्प कर सकते हो। अच्छा, नहीं मतलब क्या है कि जैसे उनको उनके पास मोबाइल भी नहीं है, उनको ऑपरेट करना भी नहीं आता है ना? पर वो तो आप तो कर सकते हैं ना आपके मोबाइल से। हाँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकता हाँ, तो आप उनको हेल्प कर दीजिए ना। हूँ। अच्छा, तो वी बोथ कैन सिट टुगेदर। या नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। ठीक। यस। एनीबडी एल्स विथ क्वेश्चंस? सुकुमार सविता परिकर, please make a हाँ note. He wants to join, and please call him. ओके मैम। मैम सविता मैम राइट, विल इट हेल्प विद Hello. इंसोम्निया? Yes. So, just 1 minute. जिसने भी अभी बोला, 2 मिनट, I'll just answer his question. कि सविता मैम, हर क्वेश्चन, सॉरी। तो आपका इंसोम्निया को जो प्रॉब्लम है, दैट इज वेरी वेरी इजिली हील थ्रू अष्टांग चिकित्सा। तो क्योंकि इंसोम्निया काफी कॉमन प्रॉब्लम है, और हर बैच में आई थिंक 10-20% लोग तो इससे सफर कर ही रहे। सो डोंट वरी अबाउट योर इंसोम्निया, तो वो इजिली सॉल्वेबल है। यस सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello. यस, मुकुल पिपालिया सर। मुकुल पिपालिया Madam, सर। yes, हाँ madam. हाँ, Madam, बोलिए। I'm 72 years old. I had a ओके cerebral ओके। stroke before 40 years हम्म because of essential hypertension, हम्म and my left side is paralyzed, hemiparalysis. हम्म I'm on anti BP essential for BP control. I'm on drugs since 40 years, हम्म। and still I'm continuing with the medicine. Now I want to ask, in this condition, can I join the class?
सर डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द क्लास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द क्लास एंड फील द चेंजेस। Can you tell me that this hemiparalysis can be cured? व्हाट कैन बी क्योर्ड? This paralysis? पैरालिसिस? सर हमारे पास एक टेस्टिमनी भी है जो बेसिकली पैरालिसिस उनका क्योर हुआ था, बट देखिए इन सब चीजों को टाइम लगता है। सो वी कैन नॉट गिव यू एनी गारंटी कि हाँ 2 महीने में ठीक होगा या नहीं होगा। बहुत बार होता है क्योंकि आपकी इतने लंबे समय से रहा है। Right. सो आई डोंट वांट दैट यू शुड ज्वाइन विथ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप्स कि हाँ 2 महीने में मैं क्योर हो जाऊंगा, ये हम लोग नहीं बोलेंगे। Okay, but बट ये this, डेफिनेटली अगर आप करेंगे, क्योंकि इंटरनल बॉडी पे काम होता है, सो रिजल्ट्स हमारे पास बहुत मिराक्युलस आते हैं। इवन ऐसे ऐसे बीमारी जो एलोपैथी नहीं ठीक कर पा रहा है वो भी ठीक हुआ है। but this BP can be cured, no? बीपी के लिए हमारा सेपरेट प्रोग्राम है रन बाय अ सिस्टर कंसर्न। Okay. Then whom to तो contact आप for this? सो यू कैन राइट योर नंबर एंड नेहा, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्योरली फॉर बीपी तो आप नेहा आपको नंबर भेज देगी, आप अपना नंबर चैट में लिख दीजिए। और आप There are two. अपने पैरालिसिस और उसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन करिए। Okay. But during these years of paralytic condition, I had some serum creatinine has gone high. That कोई can प्रॉब्लम be. नहीं है, वो सब दैट ऑल विल बी टेकन केयर इन द प्रोग्राम इटसेल्फ अष्टांग चिकित्सा। Okay. So this can give benefit at least in the BP and creatinine. या बीपी के लिए आपको यू हैव टू ज्वाइन अ सेपरेट प्रोग्राम प्योरली फॉर बीपी। अच्छा. Then whom to contact? या सो आप अपना नंबर लिख दीजिए एंड नेहा विल send you the number by WhatsApp. Or shall I write the details in WhatsApp group? नहीं, आप WhatsApp ग्रुप में भी लिख सकते हैं और इसमें भी चैट में लिख सकते हैं। Okay, okay, okay. Thank you. Okay. Thank you. Yes. Anybody else with their questions? मैडम हेलो मैडम, मैं सुकुमार Yes. परिडा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जी। मैडम मैं उड़ीसा अपना से बोल कैमरा रहा हूँ। प्लीज ऑन कर लीजिए so that I know exactly who I'm speaking to. ओके ओके। हेलो Yes sir, number Sukumar Parida number sir. chat kei apano. Sir, you're on mute. I cannot hear you. मैडम Yes, tell me. इज इट ऑडिबल ना मैडम? Yes, you're audible. Very much. मैडम ये मेरा एक ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट साइड में, ट्यूमर ऑपरेशन अच्छा। हुआ था। ईयर ड्रम में ट्यूमर ऑपरेशन हुआ था। ये ऑपरेशन के अच्छा। 1 महीना के बाद मेरा फेशियल पाल्सी हो गया। अच्छा। बेल पाल्सी, इसमें सेंसेशन अच्छा। नहीं है। मेरा मुंह में अच्छा। सेंसेशन नहीं है और आंख बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये वन साइड में खा नहीं पा रहा हूँ ठीक तरह से, ये हो रहा है। अच्छा। हम्म। और मेरा लेफ्ट साइड भी थोड़ा वीक है, लेफ्ट साइड टोटली। अच्छा। मगर मगर ज्यादा ये फेस में हुआ है, जो सेंसेशन वगैरह नहीं है। क्या अभी जो मैं थेरापी करूंगा इसमें फ्रूटफुल आएगा क्या मैडम? 100%, जैसा कि मैंने अभी सर को बताया, इनके हम्म इसके पहले जो सर सुरेश सर जो पूछ रहे थे कि देखिए हम्म टाइम लगेगा, बट हम्म आप अगर डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करेंगे आपको फर्क खुद ही नजर आएगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि मिराक्युलसली आपका 2 महीने में ही पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी डिजीज जितनी पुरानी है टाइम तो उसको लगना ही है। ओके। ये जो 7,500 जो हमारा फीस है, जो हम्म। फीस होता है, ये 3 वीक्स के लिए या 4 वीक्स के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा 2 महीने के लिए 9 ओके वीक्स की प्रोग्राम है ये। ओके 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 ओके, थैंक यू
मैडम नेहा मैडम मेरे को लिंक वगैरह भेजेंगे तो मैं उस हिसाब से पे करके हाँ, ये आप करूँगा। अपना मैसेज कर दीजिए नंबर, वो लिंक जरूर भेज देंगे आपको। और हाँ ऐसे हम भी मैं वेबिनार ग्रुप में लिंक आने ही वाला है, रिकॉर्डिंग लिंक सब आएगा वेबिनार ग्रुप में। ओके ओके ओके, थैंक यू। Could you hear me? Yes, Dr. JP Tiwari, sir, I can hear you. Okay. I have a question. I have some problems related to allergy, skin allergy. Okay. Throughout body there is some problem of itching and all that, and then the face, on face there are number of allergic kind of reactions are there. Okay. Lot of itching is there. So this course is this batch is for neuro related this thing, or do you have any separate batch for skin allergy or blood purification, detoxification related kind of things? Sir, this program is neuromuscular, that is what we call. But Yes. detox जब आप कुंभक करते हैं ना, कुंभक का one outcome of कुंभक is the detox. जो mostly हम लोग के शरीर में most of the people the detox is not happening. Whatever they do, people take detox water, lot of things they do, but the detox is not happening. So when you do kumbhak, then your detox starts happening, the lymphatic circulation starts happening, which again detoxes the body. सब toxins release होते हैं. So ultimate outcome is allergy वगैरह होता ही इसलिए क्योंकि आपके body में toxins हैं. So this batch, so there is a separate batch for this, or this is a common batch? No, there is no separate batch. You have to join Ashtaang Chikitsa only. So this batch when you are starting? Normally? From this Monday. This Monday. No, this Coming Monday is Monday. okay. This Monday is not possible. So next when? So we start a batch every Monday. So what you can do is, as I told the earlier participant also. Okay. Excuse me. That is okay. That is okay. That is so okay. But every you Monday can you are always starting a batch, book a- separate batch. Pardon me? Every Monday you are starting a batch, depending upon the Yeah, number of every Monday we participants. are starting. So what you can do is you can book your seat because we don't take, n number of participants. तो हमारा participants अगर भर गया तो आपको फिर सीट मिलना मुश्किल हो जाए. No, not a problem. I'll take somewhere in the month of April, maybe, because I'm. It's your wish. No problem. No problem. So then that time I will contact, right? Okay. No problem. Right. The same numbers and all that. Yes. Same numbers. Okay, thank you. So there is a common program for all kind of. Yes, common remedies. program. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Anybody else from the participants who would like to ask their question? Neha, have we taken up all the chat questions? Yes, ma'am. Shell Pradhan sir wants to join, so please note his number. Yes, ma'am. Dr. Nilesh ji right, myasthenia gravis can be treated or not? Myasthenia gravis can be treated. It's an autoimmune disorder. तो हमारे पास बहुत सारे patients हैं जिनको ये similar problem है. But as I was saying earlier, time तो लगने वाला है. और आपको बहुत सारे टेस्टिमनी सर, डॉक्टर नीलेश सर, as you've asked in the chat, YouTube में भी देखने को मिलेगा. And couple of them Neha will also be sharing in the webinar group. Anybody else from the participants? Please do not hesitate. आप प्रोग्राम ज्वाइन करें या ना करें, आपका हक बनता है अपने शरीर के बारे में जानने का. Megha, ma'am, right? Have a one question. Does it help with the shooting pain in nerve? Does it help with the shooting pain in nerve? Definitely it helps in the shooting pain. Here we are treating neuro health issues and musculoskeletal problems.
अंडर द हैट ऑफ अष्टांग चिकित्सा। तो पेन ही हमारा मेन चीज है जो हम लोग ट्रीट करते हैं। यस शालिनी शेखावत मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Actually, hello. I wanted to tell you, uh, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear Hello. you. Yes, ma'am. I underwent endometrial uterine surgery in April 2020. Thereafter, I was given radiation, and after that, I've had a lot of health issues. Severe bladder incontinence, problems with the bladder. I developed umbilical hernia, hiatal hernia, and my entire joints and bones pain terribly. Weight gain, gastritis, etc. Multiple issues. So would Okay, this so help? could you repeat what happened earlier? What did you go through? I went through endometrial uterine cancer. They did a radical Okay, hysterectomy. After that, I okay. was given radiation. But after the first radiation, only kind of got messed up. And they had to re-hospitalize me because my parameters were very critical. So I think for almost 2.5 months after the surgery, I was in the hospital. And after that, How my old are you? bladder was impacted very. Hello, How old are you? I am 56. Okay, okay, okay. Hmm. ठीक है. And my So it's bladder like was post impacted bad. menopause. हाँ. Yes, my bladder was impacted badly for 2 years after, like 21, 22. I had to wear diapers 24/7. Then recently, I went through a lot of procedures in the last couple of months. They found precancerous polyps in my intestine, so that had been taken off. Then I had some problem. I went through, what is it called? My memories also got impacted. They No put worries, some ma'am. pipes and all in my bladder and in my abdomen. And I have umbilical hernia after the surgery. I have hiatal hernia after the surgery. And I think the stomach is pressing on the diaphragm, and I am just gaining weight. And my joints and bones, like, they really hurt very badly. All the time I'm in pain, fatigued, exhausted. Okay, ma'am, what I suggest is I would like Swamiji to answer this question for you. So, in the webinar group or in the chat, whatever it is, or maybe if you can give your number. So, if you can give I'll us the give. details, we'll ask this question to Swamiji and get back to you. Don't worry. Okay, so should I give you my number? Yeah, you can give your number. So Neha will make a note. And on personal message, if you can send to Neha what all your problems are. If you don't want to post in the webinar group, that's all right. So then we can take it up with Swamiji and get back to you. Okay, thank you so much. So And what which would be the program would be personal number? suitable for you? Huh? Neha will contact me, so then I give her the details, right? Yeah. So if you can just text your number, Neha will make a note. And there is one more question. Yeah. Hello. Yeah, tell me, ma'am. My father is 86 years old, and he will be undergoing a knee replacement surgery at end of this month. And in 2022, he had some problems with the liver and the pancreas. He was hospitalized. And after the hospitalization, he suffered from, I think the doctors call it ICU psychosis or ICU syndrome. Okay. So he was like, he had to be re-hospitalized, and then we had to take him to a neurologist. So he's fine now, but now I'm worried because he will be undergoing surgery again. Again, he will be in the ICU, and now he's a little more older, like he's 86. See, the thing is, aging is something we can't help really. But before knee replacement, if he wants, he can do Ashtaang Chikitsa and see, because if the condition of the knee is that it's in 4th stage, ma'am, I'm sorry, he has to go through an operation. But Yeah, agar the usse right knee better is state totally gone. see, that depends. People when they are taking, the X-rays and all, तो उसमें आता है, whether it's 4th stage or वो whatever. X-ray ले लिया doctor ने, and he says the right knee is totally gone. Left knee is also So, bad. no, totally gone का कोई मतलब नहीं है, because there are stages. So stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. अगर वो stage 4 में, तो उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, सिंपल है. और अगर stage 4 तक नहीं पहुंचा, तो maybe he can do Ashtaang Chikitsa and see.
Okay, and he has a severe obstructive sleep apnea, which he was हाँ diagnosed in तो January. तो आप उनका भी ना प्रॉब्लम्स लिख डालिए। नेहा जब आप नेहा को मैसेज करोगे ना, सो बोथ द केसेस विल आस्क स्वामी जी व्हिच प्रोग्राम वुड बी बेस्ट। Okay, thank you so much. थैंक यू। ओके And one last question. One या last इट्स ओके। question. My mother suffers, she's also 79, 80. She suffers from acute anxiety, depression, and unknown fear. And So she's program is asked, saying she is she used to be asthmatic. Now that is better, but like ever during the 71 war, my father was declared missing. So ever since she has, like, I as a child, I have only seen her sick, and now the anxiety and fear and stress levels are very high. So she's developing a lot of other physical issues, insomnia, etc. so see Ashtaang Chikitsa will definitely help her get over all these things। तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप अपना दोनों अपने और अपने डैड का प्रॉब्लम लिख डालिए। Swami ji will suggest the program which is suitable for you all, and then let's see step by step. If Mama can do it, then it will be good for her. Okay, thank you so much. Thank you. Anybody else from the participants who would like to ask their question? Ma'am, I have got one question. Okay. I am from Yes. batch 171. Okay. Currently, I have been doing this Kumbha Kriya and all. Okay. Nowadays, these stroke-related issues have become very common among the youngsters who is a working professionals and especially in IT field. Okay. If you see the news currently, right? Okay. The CEO of Zerodha, who is a very he's a main man in the Zerodha branch. Okay, he also got a stroke and all. Okay, so this Ashtanga Chikitsa, right, the Kumbhak Kriya, will it help in avoiding the stroke, and what kind of kriyas a person has to do, or is there any special program? सर देखिए, वो जो जेरोदे को हुआ वो तो बोलता ही, मतलब उससे तो क्लियर है कि ये जिम वगैरह जो भी कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली ये सब बाहर का कॉस्मेटिक इम्प्रूव करने के लिए, बट अंदर का जो ताकत है वो बढ़ नहीं रहा है। Why is it that even a 30-year-old is getting a heart attack and expiring? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका अंदर का ताकत तो बढ़ा हुआ है ही नहीं, और आपने कुंभक किया है, तो जो कुंभक करता है उसका अंदर का ताकत बढ़ा हुआ है, तो एज इट इज स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते। और अगर हुआ भी, यू आर बेटर ऑफ देन द रेस्ट ऑफ द पीपल हु नॉट डन। Okay, so the Pitta module, will it not Pitta, Kapha module, will it cover these kind of aspects because it is related to the brain? Yes sir, don't worry। Okay. और आप ये इतना सोचिए नहीं that stroke and IT professionals, please take this out of your mind. Yes, that keeps on coming, ma'am, and we see these kind of news. I know अगर हम आसपास अपने सिमिलर एज के लोगों को देखते हैं तो वो आता है, बट ट्राई टू टेक इट ऑफ योर माइंड कि और थोड़ा मेडिटेशन करिए, कुछ नहीं हो। Anybody else from the participants? So Neha, we will close the session. Thank you so much to all the participants who have made an effort to attend the Ashtaang Chikitsa webinar. कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी है तो प्लीज बेझिझक वेबिनार ग्रुप में लिख डालें। Stay well.